Hello everyone. In this video session, we are going to discuss a very important topic, that is Millennium Development Goals, along with its latest PYQs. So it's a very important topic. आपको इस टॉपिक को सुनना है, prepare करना है, and we will also learn how we are going to attempt PYQs related to MDGs. So first of all, आपको ये पता होना चाहिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या. इनका थोड़ा सा आउटलाइन जो है वो ही सिर्फ आपने प्रिपेयर करना है, राइट? सो यू शुड नो इन सितंबर 2000 द world leaders means United Nations member states, they came together at the United Nations headquarters in New York to adopt the United Nations Millennium Declaration. I repeat, सितंबर 2000 में क्या हुआ था, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो सारे इकट्ठे हुए वेयर इन न्यूयॉर्क. व्हाट दे अडॉप्टेड, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन. The declaration committed nations to a new global partnership. तो declaration का क्या मतलब है? एक statement है, एक announcement है, जिसमें सभी nations ने commitment show की to a new global partnership. So you have to focus upon the word over here, that is global partnership, to reduce extreme poverty, hunger, illiteracy, and set out a series of 8, remember, 8 time-bound targets, जिनकी deadline क्या है? 2015. So we will discuss all these MDGs in this video session one by one, and stay with me so that you prepare all the MDGs here watching this video only. So this is a PYQ based on MDGs. So इसमें दो statements given है. You have to read these two statements very carefully. It's not a difficult question, so please don't worry. Read it carefully. Statement 1. The Millennium Development Goals were adopted in the United Nations in the year 2010. Statement 2. Developing a global partnership for development was one of the Millennium Development Goals, and you have to give the answer to this question from these 4 options given over here. I want you to answer in the comment section below this video, and then after that I will discuss it. Thank you. I hope everyone has commented their answers below. And now let's discuss this PYQ. So it's very easy. जो आपने पहले content prepare किया है, based upon that ही PYQs क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? सो स्टेटमेंट 1 जो है, अगर आपने कॉन्फिडेंटली कंटेंट को प्रिपेयर किया है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशंस in the year 2000. You should be very clear. Please prepare it here also. The year is 2000. In statement 2, yes, हमने ये discuss किया था, developing a global partnership for development was one of the Millennium Development Goals. So global partnership जो है, that is the key word in this statement. So because of that, statement 2 जो है, that is only correct. So out of the 4 options given to you, answer to this question is 2, wherein only statement 2 is correct. I hope this is very clear to you. So we can also prepare this over here. The time frame of MDGs is 2000 से लेकर 2015 तक. Even ये एक PYQ है UGC NET exam का. That's why I'm mentioning it over here. So let's proceed further. Next, you have to prepare these 8 MDGs very nicely, because आपको match the following question attempt करना है based upon this. You should know कि goal 1 क्या है, goal 2 क्या है, right? So goal 1 is to eradicate extreme poverty and hunger. Goal 2 is to achieve universal primary education. Goal 3, it is to promote gender equality and empower women. Goal 4, it is to reduce child mortality. Goal 5, it is to improve maternal health. Goal 6, it is to combat means to fight HIV, AIDS, malaria and other diseases. Goal 7, it is to ensure environmental sustainability. Goal 8 is to develop a global partnership for development. At the first level, ये सारे goals with their numbers, you should learn them. Next,
इन्हें याद करने का ट्रिक क्या है? यू कैन लर्न देम लाइक दिस, यू कैन रिमेंबर देम लाइक दिस. गोल वन क्या है? टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, राइट. अगर हमने फोकस किया है फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव पॉवर्टी, गरीबी, हंगर, भूख के ऊपर, देन वी कैन फोकस अपॉन टू अचीव प्राइमरी एजुकेशन. ठीक है, सो गोल वन टू रिमूव पॉवर्टी एंड हंगर. आफ्टर दैट जो फोकस है वो जाएगा प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर. अगर पर्सन पढ़ा लिखा है तो उस पर्सन का फोकस जो है कहाँ पे जाएगा? जेंडर इक्वालिटी की वो बात कर सकता है, वो विमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकता है. सो यू हैव टू लर्न इट दिस वे. आई रिपीट, गोल वन टू रिमूव पॉवर्टी एंड हंगर. आफ्टर दैट गोल टू टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. अगर एजुकेटेड है तो वो प्रमोट करेगा जेंडर इक्वालिटी को, वुमेन एम्पावरमेंट को, राइट. वुमेन की यहाँ पे बात की है तो नेक्स्ट गोल 4 में the focus is on to reduce child mortality. Mortality means the death rate, so you should know the meaning of this word. अब गोल 4 में चाइल्ड मोर्टालिटी की बात की गई है तो गोल 5 में यू कैन रिमेंबर इट इज रिगार्डिंग मैटरनल हेल्थ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैटरनल? मदरली. मैटरनल वर्ड जो है इसका आपको मीनिंग जो है ज़रूर पता होना चाहिए. दिस इज रिलेटेड टू द वर्ड मदरली, राइट. अब यहाँ पे गोल 5 के बाद गोल 6 को आप कैसे याद रख सकते हैं? अगर आपके माइंड को पता है कि जो गोल 6 है, सॉरी गोल 5 जो है दैट इज रिगार्डिंग हेल्थ, आफ्टर दैट जो गोल 6 है वो डिजीजेस के ऊपर फोकस्ड है, राइट. वो डिजीजेस के ऊपर फोकस्ड है. तो इस टाइप से आप इसका सीक्वेंस जो है याद रख सकते हैं. देन गोल 7 यू कैन रिमेंबर इट इज रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. एंड गोल 8 जो है, Goal 8, that is the last goal, it focuses upon global partnership for development. This is the way to learn all these 8 goals. Now learn them here itself so that you're able to attempt PYQs based upon these 8 goals. Now read this question carefully. It is a match the following question. In list 1, goal 1, 2, 3, 4 are given. In list 2, the aim of that goal is given. So try to match it and give your answers in the comment section below this video. So you have to choose your answer from the 4 options given over here. So I'll give you 30 seconds to attempt this question. I hope everybody has correctly answered this question. It is easy, right? तो अगर आपने कंटेंट अपना अच्छे से प्रिपेयर किया है, you will be able to attempt this match the following question correctly. So let's discuss it. अब goal 1 हमारे माइंड को क्लियर है. Goal 1 is related to poverty, hunger. So goal 1 को आप रिलेट करेंगे, मैच करेंगे with point number 3. Then goal 2. Goal 2 में क्या था? Poverty, hunger के बाद primary education, right? So goal 2 has to be matched with the 4th point over here. Goal 3. गोल 3 में क्या था? अगर एजुकेटेड हैं तो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस है. सो गोल 3 हैज टू बी मैच्ड विद पॉइंट 1. एंड देन गोल 4 जो है उसे आपको मैच करना है विद चाइल्ड मोर्टेलिटी. सो यू हैव टू read the options carefully. अब ऑप्शन नंबर 1 में इट्स गिवन ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1, डी के साथ 2. सो वहाँ पे एग्जामिनेशन डे वाले दिन आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, केयरफुली चेकआउट करना है कि ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1, डी के साथ 2 एंड देन मार्क योर आंसर एज ऑप्शन 1. नेक्स्ट, अब हम इन सभी गोल्स को one after the other थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर करेंगे, right? So herein I'm talking about goal 1. You remember this, that goal 1 is regarding eradicate extreme poverty and hunger. अब goal 1 ये इसका broader perspective है, what you have learned so far, but goal 1 के अंदर कुछ targets भी हैं. ठीक है, so in order to get that JRF or in order to attempt difficult questions in UGC NET exam, you have to prepare this content, right? So let's do this. It is very easy. Do not worry at all. So first target is the proportion of people whose income, the word is income, जिन लोगों की income जो है that is less than $1.25 a day, that should be halved.
halved, you understand, between 1990 and 2015. तो ये एक टारगेट है, टारगेट था रादर, ठीक है, कि proportion of people जिनकी इनकम लेस देन $1.25 a day थी, that should be halved. सो इसे क्रैम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक माइंड में आइडिया होना चाहिए. We are talking about over here income. Income जो word है, it is related to poverty. ठीक है, it is indirectly related to the word poverty. तो common sense says कि ये जो target है, it should be related to goal 1. ठीक है, then target 2 है achieve full and productive employment and decent work for all. ठीक है, टू अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट. अगर टारगेट होगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, देन ओनली पॉवर्टी, हंगर जो है वो चीज रिमूव होगी. तो इट इज कॉमन सेंस दैट दिस टारगेट इज रिलेटेड टू गोल 1 इन इटसेल्फ. टारगेट नंबर 3, यहाँ पे ये डायरेक्टली रिटन है, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर. Hunger जो keyword है, it is already given in this target, so it's very easy. That should be halved. ठीक है, तो आपको ये तीनों टारगेट्स का डेफिनेटली आइडिया होना चाहिए. अगर इन तीनों टारगेट्स में से कल को आपके यूजीसी नेट एग्जाम में कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट्स आते हैं, तो योर माइंड शुड बी अवेयर एटलीस्ट कि ये तीनों टारगेट्स जो है ये गोल 1 के साथ रिलेटेड हैं. ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, हंगर. दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर. नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस गोल 2. अब गोल 2 जो है प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर है, सो इट्स वेरी इजी. इसमें क्या टारगेट था, टू इंश्योर दैट बाय 2015 चिल्ड्रन एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सली, बॉयज एंड गर्ल्स अलाइक, बी एबल टू कंप्लीट अ फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग. अब यहाँ पे मैंने फोकस किया है ऑन द वर्ड प्राइमरी बिकॉज दिस इज अ PYQ. ऑप्शंस में दे विल मेंशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, समथिंग एल्स. ठीक है, तो आपने ध्यान से वहां पे आंसर देना है. गोल 2 में जो फोकस है, इट वाज टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, नॉट सेकेंडरी एजुकेशन, नॉट टर्शियरी एजुकेशन, राइट. नेक्स्ट, गोल 3, दिस इज वेरी इजी, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर है. वी विल नॉट डिस्कस इट मोर. तो इसमें जो है फोकस है टू एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटी यू अंडरस्टैंड, द डिफरेंसेस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, preferably by 2005 and in all the levels of education no later than 2015. So this goal is easy. Next, goal 4. यहाँ पे आपको ये प्रिपेयर जरूर करना चाहिए, टू रिड्यूस बाय 2/3. 2/3 आपके माइंड को डेफिनेटली पता होना चाहिए. बिटवीन 1990 एंड 2015 द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट. अंडर 5 मीन्स जो अंडर द 5 एज ग्रुप ऑफ किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके ऊपर फोकस था कि हमें चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो डेथ रेट है अंडर द एज ऑफ 5 years, उसे हमें रिड्यूस करना है बाय 2/3. सो यू हैव टू रिमेंबर, रिड्यूस बाय 2/3 अंडर द एज ऑफ 5. उस रेट को हमें रिड्यूस करना है. किस रेट को, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को. नेक्स्ट, गोल 5. गोल 5 में अदरवाइज हमारे माइंड को पता है, इट इज रिगार्डिंग मैटरनल हेल्थ, राइट. सो एटलीस्ट वी शुड नो कि ये इसके टारगेट्स हैं. फर्स्ट, reduce by 3/4 the maternal mortality ratio. Achieve by 2015 universal access to reproductive health. Universal means sabhi ko, worldwide, access to reproductive health. ये दो targets हैं goal 5 के अंदर, you have to prepare them. Next, goal 6 जो है ये easy है. इसमें 3 targets दिए हुए हैं, तीनों targets में keywords हैं. In all the 3 targets, you can see there are keywords, that is HIV AIDS, treatment for HIV AIDS, diseases, malaria. So mind को ये पता है कि ये जो तीनों targets हैं, these are related to goal 6, right? So this is a easy goal. इसमें से आपको questions नहीं आएंगे. Then goal 7 is there. अब गोल 7 जो है, इट इज रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. तो आपके माइंड को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर पॉइंट्स में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं जिन्हें मैंने रेड किया हुआ यहाँ पर, यू कैन सी integrate the principles of sustainable development into country policies and programs and reverse the loss of environmental resources. तो common sense is कि
we are talking about reversing the loss of environmental resources. So definitely ये जो target है, it comes under goal 7. Then second target है reduce biodiversity loss, a significant reduction in the rate of loss. Biodiversity loss के reduction की बात की गई है, तो biodiversity जो word है, it is connected with goal 7. बायोडाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या है? द वैरायटी ऑफ लाइफ दैट इज एग्जिस्टिंग इन द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है. देन टारगेट 3 जो है उसमें भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं. सस्टेनेबल असेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन. सो सस्टेनेबल एसेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन. यहाँ से हमारे माइंड को पता चलता है कि ये गोल 1 के साथ रिलेटेड नहीं है, ये गोल 2 के साथ रिलेटेड नहीं है, ये गोल 3, 4, 5 इन सभी गोल्स के साथ रिलेटेड नहीं है. दिस इज रिलेटेड टू गोल 7 ओनली. ठीक है. टारगेट नंबर 4. It's written to achieve by 2020 a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers. ठीक है. तो यहां से भी हमें पता चल रहा है कि ये जो टारगेट है इट इज रिलेटेड टू गोल 7. इट इज फोकसिंग अपॉन इंप्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स. जो स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी बात की गई है. ठीक है. नेक्स्ट we will talk about goal 8. अब goal 8 में जो keywords हैं that is regarding global partnership, right? So यहाँ पे इसके ये targets written हैं. तो जो target number 2, 3, 4 and 5 हैं उन टारगेट्स में आप देखें डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, एसेंशियल ड्रग्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये कीवर्ड्स मेंशन्ड हैं. तो माइंड को ये समझाना है कि जब ये कीवर्ड्स मेंशन्ड हैं तो ये गोल 8 के साथ रिलेटेड है. अदरवाइज अगर आप फुल फ्लैश नॉलेज लेना चाहते हो टारगेट्स के रिगार्डिंग, सो यू कैन रीड देम once. So target 1 is develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system. This is the target. Target number 2, address the special needs of least developed countries. Target 3, address the special needs of landlocked developing countries and small island developing states. Target number 4, deal comprehensively with the debt problems of developing countries. Target number 5, in cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable essential drugs in developing countries. Target number 6, इसे आप थोड़ा सा अपने माइंड में जो है बिठा सकते हैं, सेट कर सकते हैं. In cooperation with the private sector, make available benefits of new technologies, especially information and communication. So from UGC NET examination point of view, आपको ये टारगेट्स जो है लर्न नहीं करनी है, क्रैम नहीं करनी है, राइट? आपके माइंड को सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको कॉम्बिनेशन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो कौन से पॉइंट्स हैं जो रिलेट होते हैं गोल नंबर 6, 7, 8 के साथ, right? So I hope this is clear to you. Now based upon all this content on this information, you should be able to attempt a PYQ that is based on MDGs. So first of all, you should know that this is a combination question. Please read it carefully. Millennium Development Goal 8. To develop global partnership for development has the following targets. So you have to read these points A, B, C, D, E carefully and you have to chalk out that in पांचों points में से कौन से relate कर रहे हैं goal 8 के साथ. So read them and you have to answer from these 4 options below in the comment section. I give you 15 seconds to attempt your answer. So now let's discuss, right? So this is a combination question. अब हमारे mind को clear है कि जो point 8 है to address special needs of least developed countries, it relates to goal 8, right? So point B जो है to halve by 2015 the proportion of population without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation. ये जो keywords हैं, they are not at all related to goal 8. Right, so this is related to MDG 7, that is environmental sustainability के regarding. Then point C, to deal exhaustively with debt problem of developing nations. Developing nations यहाँ पे keywords दिए हुए हैं, तो this is related to goal 8. Point number D, to provide access to affordable essential drugs in developing world. Developing world यहाँ पे लिखा हुआ, तो this relates to goal 8.
पॉइंट नंबर ई, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अंडर गोल 7 में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में रिगार्डिंग स्लम ड्वेलर्स. सो पॉइंट नंबर ई रिलेट्स टू MDG 7 and not MDG 8, right? So the answer to this question will be 2, wherein A, C, D, these points are being covered. I hope you are able to understand how to attempt these PYQs, MCQs. So all the very best for your preparation, and if you want to prepare more such PYQs, you can buy my book published by Oxford University Press, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, और you can contact me on the WhatsApp number given in the description box. And if you have any queries you can ask me there, and if you want कि कौन से और topics जो हैं I should discuss with you along with their PYQs, please suggest those topics regarding paper 1 in the comment section below. Thank you for watching this video session.